किसी के लिए सीट नहीं छोड़ी, सिर्फ मेरे लिए सीट छोड़ी है. मुझे पता है ये सीट छोड़ने में कोई खतरा नहीं है. Amir, I think most of your movies were listed by Shweta. There's really nothing. I think if you touch anything, it turns into gold. Every movie that you've done has been a super duper hit. You've done Satyamev Jayate. You've done a variety of things, and each one of them better than the other. But what does success mean to Mr. Amir Khan? You know, what is it that gets you going? I'm not quite sure of that because I've not really thought about success when I'm doing work, when I'm doing my films, or when I'm doing the television show, whatever I'm doing. I'm not really thinking of success as such, the way that success is usually understood. Hi, Neeta. So I don't really view success in that sense. I mean, I'm more into the excitement of the work that I'm doing. I guess if I really put my mind to it, then success for me would mean that what I'm taking up as a job or as something that I'm passionate about, does it make me happy? Is it something that stands up to my own expectations? Does it stand up to, and what it's meant to do, is it able to achieve what it is meant to do? These are the two standards I would place for success for me personally. So what's giving you a lot of happiness in the recent past that you've been working on? Or Well, we of course heard about your recent movie that you've signed with Sunny Leon, but yes. No, I've not signed a film with her yet, but I would love to. I think what's giving me happiness right now is the two things that I'm working on. One of them is a film. It's called Dangal, and that's a film that I'm really passionate about. It's a beautiful story which has really moved me and affected me. So I'm in the middle of that. That's giving me a lot of satisfaction. And the other piece of work that I'm doing is in the area of water. Me and my team of Satyamev Jayate, we are trying to work with this issue of water in Maharashtra and see how we can contribute in a constructive way towards it. So these are the two things I'm doing, which is giving me a lot of satisfaction. Yes. You recently met up with the governor of Maharashtra also regarding for the same issue. Yes, yes. How's that moving forward? Well, the work is going on very well. Actually, it started with me and Devendra ji meeting one day, and me and my team. You know, when we did Satyamev Jayate, we did that for 4 years. We started in 2012. We felt that we were not sure how it would be accepted, whether people would be interested in it, on national television, which is an entertainment channel, we're talking about social issues. So we didn't know how it would be received, and we were really thrilled and happy to see the kind of response it got. It indicated to us that people are ready for change, they're wanting change, and they're willing to work towards change. And that was very encouraging for us. And so Satya and me, who's the director of the show, he and I, we discussed about it, and we said, what if we take up one of the issues and actually work in that issue until we reach to its end, until we try and solve it to its end. So that's what we decided to do, and which is why you don't see Satyamev Jayate on television right now, because the entire team of Satyamev Jayate is working on this issue. And so we chose water and Maharashtra because Maharashtra is where both Satya and I are from. And we chose water because we feel it's a very fundamental issue. So we are moving a step further, I would say. We are still, you must understand that we see ourselves as communicators. So there are politicians who have a lot of work to do in this field, and there are social activists. All of us have a contribution to make, and we are trying to fill in the contribution that perhaps the gap of communication is what we are trying to fill in and trying to contribute in that. Nana over here is here. He himself has been doing that a lot, and in fact, we are supposed to meet in a few days to discuss that. So he's been working in this, I think, for a year now, or maybe longer than that. Yeah. You as a means of communication, and obviously you've not shied away from speaking your mind out, whether it's been the intolerance issue or any of those things you've always spoken about. Are you finding that, we are living now in a very difficult world with, one where there's social media, where you're allowed to talk whatever you want, abuse, shout, troll, and on the other side where anything that we speak is under scrutiny?
Well, you see, everything that we speak is under scrutiny, has always been under scrutiny. I don't think that has changed. I think the social media is just another platform, so I don't think we can blame the platform. So what happens is that the social media, when it has great potential to be used in a very, very positive way. And a lot of people are using social media in an extremely positive way to contribute towards social growth. However, social media being a platform where you have anonymity, लोग आपको पहचान नहीं पाते हैं, तो आप कुछ भी बोल के चले जाते हैं. तो इट्स वेरी सिमिलर कि एक आप अगर भीड़ में हैं तो भीड़ में आपने कुछ चिल्ला दिया, किसी पे पत्थर फेंक दिया, किसी को पता नहीं चलता ये पत्थर कहाँ से आया, किसने क्या कहा. सोशल मीडिया में भी वही है, एक भीड़ का माहौल है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि आप कौन हैं, किसने क्या कह दिया. तो दैट एस्पेक्ट इज सिमिलर, बट वी हैव टू लुक एट द पॉजिटिव साइड एंड वी हैव टू ट्राई एंड यूज इट फॉर द पॉजिटिव. But your intolerance, statement was not ignored. Did you think, or do you believe that it was blown out of proportion, or that was not exactly what you had to say? Well, in case you want the full detailed answer for this, you can see the latest Aapki Adalat where I've answered in about 1.5 hours on this issue. And Rajat ji asked me from every angle about this. So a detailed answer you can find on that. But a more concise answer which I can give you is that certainly what I said was misrepresented. And a lot of the media misrepresented what I said. And how does family deal with things like these? Badly. They get badly affected. There's no other way. So my wife gets upset, my mother gets upset, my kids, my sisters and brothers people who love me obviously get upset that if friends, Neeta, yes, people who are close to me, who love me would get upset if I'm being misunderstood and if I'm being attacked for no reason. So obviously people who are close to me would not like it, yeah. Were there a lot of people who called you in support? Oh yes, I mean there were a lot of people who were supportive of me, and not just from people who know me intimately, but from people who I met at large. Wherever I went, people, I go all over the place, I'm traveling. Wherever people met me, they came forward to tell me that they really support me. How hands-on dad are you? How involved are you in the whole family? I have to be honest, I'm not a very hands-on father. Yeah. But from Monday, I'm planning to be a very hands-on father. No, I promise. It's not a joke. So, Isn't it always a Monday or a first of the month? No, I'm hoping this time it's not that. So let me give you a more overview of this. I've always been a person who's been very emotional. I'm a very emotional person. And I'm very close to people who I love, my parents, my family, close friends. I'm very attached emotionally to them. And I always feel that I want to spend more time with my mother. I want to spend more time with my children. I'm constantly fighting that battle of trying to, मैं और वक्त बिताना चाहता हूँ अम्मी के साथ, बच्चों के साथ. लेकिन वो वक्त मुझे मिलता नहीं. और करीबन 27 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, और करीब 2 साल पहले मुझे ये समझ में आई बात, 25 साल के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि एक्चुअली वक्त तो हमेशा था. मैंने चुना कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है. तो वक्त हमेशा था. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे ये बात से समझौता कर लेना चाहिए कि मैं बहुत ही सेल्फ अब्जॉर्ब्ड किस्म का इंसान हूँ. ये बात मुझे मान लेनी चाहिए पहले कि मैं अपने ज़िंदगी में इतना खोया हुआ रहता हूँ, अपने जो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो मेरी जो इच्छाएं हैं या मेरा जो पैशन है उसमें मैं इतना खोया रहता हूँ कि जो इर्द गिर्द मेरे लोग हैं उनको मैं बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे लिए थोड़े सॉफ्ट फोकस हो जाते हैं. कोई तकलीफ होती है तो सब कुछ ड्रॉप करके मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन तकलीफ का इंतजार हम क्यों करें? सिर्फ जब तकलीफ होगी तभी मैं अम्मी के साथ रहूँगा, ये ठीक नहीं है. तो ये सब चीज़ें मैंने सोचने लगा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये शायद मैं इस किस्म का इंसान हूँ और मुझे ये बात मान लेनी चाहिए. और अगर ये बात मैं मान लूँ तो शायद फिर इसके बाद मैं इसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर सकता हूँ. फर्स्ट आई हैव टू एडमिट कि दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, एंड देन आई कैन ट्राई एंड चेंज इट. So that is the process I'm in right now. You've caught me in the middle of the process. I have finally come to terms with the fact that this is the kind of person I am. Unfortunately, I have to be honest, I'm too self-absorbed in my own life. And now I'm trying to change the gear and be more, spend more time with the people who I love and I really want to. So I'm trying to shift the balance now. कोई भी एक व्यक्ति होना आपके लिए तो ऐसे मंडे से मैं शुरू कर रहा हूँ. इन अदर वर्ड्स मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया है मंडे से.
I'll be dropping Azad. बदलाव और आपका व्यक्तित्व, शायद ऐसा कोई भी रोल नहीं होगा जो आपने नहीं किया हो. आप रेसलर का रोल करने वाले हैं. You've also been an alien. You've played a cop. I think the only role you've not played maybe till now is a politician. And any specific reason कि आपने एक राजनीतिक रोल नहीं किया है? नहीं किया ना, हाँ नहीं किया. I don't think. मैंने भी थोड़ी रिसर्च की थी आपसे बात करने से पहले. नहीं, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है. और कोई अच्छी कहानी आएगी जिसमें नेता का रोल करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसे कोई इसका एक कारण ये है, ये हीरो का काम करते हैं और कोई पिक्चर में नेता हीरो रहता ही नहीं, विलन ही रहता है. इसको बदलना पड़ेगा देवेंद्र जी, इसको बदलना पड़ेगा, मैं करूँगा. लेकिन अगर if you had to play a role of a politician, is there someone you look up to? You would want to kind of go to that person for tips. Well, let me explain. As an actor, जब मैं किसी कैरेक्टर को देखता हूँ तो उसका प्रोफेशन जो है वो कैरेक्टर नहीं होता. प्रोफेशन में और कैरेक्टर में अंतर होता है. मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ वो मेरा कैरेक्टर नहीं, वो मेरा प्रोफेशन है फिल्म के अंदर. ये रेसलर का जो मैं रोल कर रहा हूँ वो मेरा प्रोफेशन है. कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, नेचर होता है इंसान का. आप अलग अलग किस्म के पुलिस वालों को देखेंगे, अलग अलग किस्म के नेताओं को देखेंगे. तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वुड लाइक टू प्ले इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट इज इम्पॉर्टेंट. तो जो रिक्वायरमेंट होगी कहानी की, जिस किस्म का किरदार लिखा जाएगा नेता का, तो उसी मैं ऑब्वियसली वही प्ले करूंगा. We've also heard about your, the 1 month holidays that you take alone. You went to. I wish. You went to Argentina, I believe. Yeah. They said I that keep last traveling. year you went to Iceland. हाँ. So ये क्या मंथन के लिए? एक्चुअली मेरी कोशिश 1 महीना तो नहीं होता, बहुत बड़ा वक्त होता है वो. आई विश आई कुड गो फॉर 1 month, बट आई डू ट्राई एंड टेक टाइम ऑफ. और जब मैं जाता हूँ मैं बिल्कुल अकेला जाता हूँ. मेरे साथ ना सिक्योरिटी होती है, ना मेरा बॉय होता है. मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारी ज़िंदगी इस प्रोफेशन में इतनी अजीब होती है, हर वक्त लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं. एक आर्टिफिशियल सी ज़िंदगी हम जीते हैं. आर्टिफिशियल नहीं कहूँगा, हमारे लिए तो रियल ही है, लेकिन कभी कभी मेरा जी चाहता है कि आई शुड बी अ नॉर्मल पर्सन. तो जब मैं कभी 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए जाता हूँ तो मैं अकेले जाता हूँ, कोई मेरे साथ नहीं होता. मैं चेक इन खुद करता हूँ, लगेज खुद उठाता हूँ. जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ टैक्सी पकड़ता हूँ. जहाँ जिस शहर में भी जाता हूँ मैं, जैसे मैं कुछ दिन पहले मैं गया था एम्स्टरडैम, तो वहाँ मैंने साइकिल बुक की और मैं 2 हफ्ता मैं साइकिल पे घूमता था हर जगह. मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें सीखता हूँ. अर्जेंटीना आप बता रहे हैं, जब मैं वहाँ तो मैंने डांसिंग सीखने की कोशिश की थी. वहाँ का एक फेमस डांस है, क्या कहते हैं उसको, टैंगो सीखने की कोशिश की थी. बहुत बुरा किया मैंने टैंगो. लेकिन आई लाइक टू ट्रैवल बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई फील जब मैं आउटपुट देता हूँ किसी भी फिल्म में या किरदार में, तो उसके लिए इनपुट्स होना बहुत ज़रूरी है. तो एज अ क्रिएटिव पर्सन आई ट्राई एंड सिंक इन एवरीथिंग आई कैन फ्रॉम पीपल, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, जो किताबें मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे अनुभव होते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो अनुभव हैं उनको मैं एनलार्ज करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मुझे मिले. मैं बसेस में, ट्रेन्स में ट्रैवल करूँ. यहाँ मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, वो मेरे लिए यहाँ मुमकिन नहीं होता. My last question, actually, नीता जी भी यहाँ पे हैं. I'm going to ask you and maybe ask her also, कि जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स जब चल रहे थे और सिमंस ने इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया. सिमंस इज प्लेइंग फॉर मुंबई टीम IPL. तो आपके मन सिमंस में का पत्ता कट. आपने फोन उठा के नीता जी को फोन तो नहीं किया कि किसी भी तरीके से आप सिमंस को आप टीम में मत रखिएगा? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन नीता जी को मैंने टेक्स्ट जरूर किया कि कुछ करो. तो नीता जी ने कहा मैं क्या करूं. हार जीत होते रहती है, बट वी शुड अप्रिशिएट द वर्क आवर टीम हैज डन. नीता जी, was there what was going on in your mind at that time when Simmons was playing? I'm going to break protocol, but I had to ask you this question. It felt quite strange sitting there and seeing Simmons playing. He's come back after 4 months of an injury, and it was the first game that he was playing yesterday after 4 months.
But I think I've been now so involved with sports, and I've learned from the biggest master, Sachin himself, that the game is all about winning and losing. And to win and lose with grace and humility is the most important. And I think also it's important that when you lose, you have to bounce back with resilience and great efforts. And I think that's what a sport teaches you. Always a pleasure, Amit. Thank you so much, Thank you so much. for Thank you. doing this for us. Thank you. Thank you.